welcome, namaskar, sat sri akal to everyone watching our coverage of elections in 5 battleground states. This is Jist News. I am Rahul Srivastava. Before we begin, please take note. This is a landmark moment in the history of digital news platforms in India. Till now, you had to sit in front of TV sets to watch poll predictions. We have brought the punditry to your smartphones and tablets. Gist News is the first digital news platform to come out with an exit poll, comprising of several rounds of extensive voter opinion gathering and deep dive into the data generated to construct a picture. Exit polls come with a hazard warning. They are a mission near impossible to predict the two stages of voters' mind, one outside the polling booth and the other inside the polling booth. The exit poll methodology is scientific, but the voter is a complex entity, pulled in multiple directions by various factors before he or she makes up his or her mind. Now let's begin with what can be the outcome of the winter test of 2023 and what impact it will have on the big final, Lok Sabha Polls in 2024. In the first phase, we will analyze the two crucial states of Madhya Pradesh and Rajasthan, two states completely diverse in their voting patterns, barring one common thread. Both states witness a bipolar contest between the Congress and the BJP. Madhya Pradesh has been a BJP bastion since 2003, right after Chhattisgarh was carved out of the state. No party can call Rajasthan the land of epic battles and valor as its fortress, as voters here haven't given a second term to any party in the last 30 odd years. Now let's first deep dive into the state called the heart or dill of India, Madhya Pradesh. The BJP has not been out of power in Madhya Pradesh since 2003, barring the 16-month period after the 2018 loss. Shivraj Singh Chauhan became the chief minister in 2005, taking over from Babulal Gaur after the BJP's victory in the 2003 elections. While the BJP lost some ground from 2003 to 2008, in 2013, the party led by Shivraj Singh Chauhan won by both a bigger seat tally and vote share. Though the Congress's vote share rose in 2013, it won fewer seats than it did in 2008. Now, before we visit the numbers, let me provide you a teaser. If one calculates the midpoints of the seats likely to be won by the BJP and the Congress, one party is ahead, but the lead is just 4 seats as far as the midpoints are concerned. Before we go into what we are going to tell you about the numbers, let me introduce the sharp minds which are going to help us decode what exactly is likely to be the battleground verdict in the two states of Rajasthan and Madhya Pradesh. On my far right, Adesh Rawal, senior journalist, Lokmat Group, but known popularly on the social media sites as the man with mysterious posts. Thank you, Rahul. Political posts. Then on next is Sudhir Thakur, my old friend, one of the sharpest minds on the BJP beat, one of the wittiest minds on the BJP beat. His writing needs worth following. And then I have Sandeep Kaur, somebody who has been doing poll surveys, exit polls, opinion polls for the last 1 decade. He's from the Ideas Factory, but it is the first time Sandeep is appearing as far as the television screen is concerned to become public that what kind of work he has been doing. Sandeep, all three of you, welcome to the show. Sandeep, सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या है कि कोई भी सर्वे करने से पहले कोई भी एंकर जो है सबसे पहला काम क्या करता है कि सही हुआ तो मेरा क्रेडिट, गलत हुआ तो आपका डिसक्रेडिट. तो ये अगर गलत हुआ तो आपकी गलती होगी. दूसरा सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि अपना जो एग्जिट पोल है वो सही जाने वाला है मध्य प्रदेश राजस्थान में? वी आर फुली कॉन्फिडेंट ऑन इट, क्योंकि हमारा जो सैंपल मेथोडोलॉजी हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट किया है. उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी हम सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया. लाइक वन कॉन्स्टिट्यूंसी सेपरेटेड इन 15 पार्ट्स. उस 15 पार्ट्स में भी अगेन उस 15 पार्ट्स को भी हम डिवाइड करके वहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट किया. तो हम अपने सर्वे के बेस पे फुली कॉन्फिडेंट हैं. यही नंबर 100% चांसेस हैं कि मैच करेंगे, बट इट्स जस्ट एन इंडिकेशन. रिजल्ट्स तो हाउ डिफिकल्ट वाज इस बार, कितना मुश्किल था मध्य प्रदेश को सर्वे करना? क्योंकि अगर हम आज जो रिजल्ट्स आपका देख रहे हैं तो उससे क्लैरिटी नहीं है पिक्चर में. यानी ये रिजल्ट ऐसा आपका सर्वे से क्या लग रहा है कि बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, या एक टेरिबली हंग वर्डिक्ट भी आ सकता है? बिल्कुल नहीं, ये या किसी एक डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा. ये इस
इलेक्शन की, अगर मध्य प्रदेश इलेक्शन की बात करें तो यहाँ किसी पार्टी का वेव नहीं है। मोस्टली जो वोटर्स कांग्रेस को वोट करा वो बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट करा वो ट्रेडिशनल बीजेपी का वोट बैंक है। सो बोथ पार्टीज का बेस है और दोनों पार्टियां जैसे लग रही है कि विनिंग पोजीशन में जीत भी सकती है और हार भी सकती है। लास्ट टाइम भी बड़े सिमिलर रिजल्ट्स थे। 2018 अगर देखा जाए तो सर्वेज भी यही कहते थे ज़्यादातर, बारिंग एक सर्वे था जो कि स्वीप दे रहा था बीजेपी को। तो ऐसे सिनेरियो में बाद में क्या हुआ कि रिजल्ट भी बड़ा सिमिलर आया, मार्जिन बहुत कम था और उसके बाद बीजेपी को उसका फायदा मिला, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ करके उन्होंने सरकार बना दी थी। तो क्या आपको लगता है कि वोट शेयर जब भी सिमिलर है तो क्या प्रॉब्लम कन्वर्जन में है, यानी आपको बराबर वोट मिल रहा है पार्टियों को, लेकिन किसी पार्टी को कुछ सीटों पे कन्वर्जन रेट उसका बेहतर है? अगर आप वोट शेयर की बात करें तो पिछले मध्य प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिला, लेकिन सीट बीजेपी को ज़्यादा मिली, कम कुछ, हाँ बीजेपी को कम मिली। कुछ सीटें ऐसी हैं जब बीजेपी पूरी तरह स्वीप करती है, जैसे सागर बेल्ट में अगर मैं कुछ सीटें बता सकता हूँ, जैसे कि सीट है आई थिंक खुरे, यानी यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं बताएंगे, मतलब इस पर कुछ सीटें ऐसी जैसे अर्बन सीट्स है, वहाँ बीजेपी का मार्जिन बहुत हाई रहता है। रूरल सीट में जहाँ वोट मिलता है वहाँ ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसका वोट शेयर बड़ा लगता है। बिल्कुल, तो कुछ बहुत सारी ऐसी सीटें जब बीजेपी बहुत मार्जिन से स्वीप करती है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई आपको ग्राउंड पे कोई वेव नहीं दिखी, तो वोटर चने खाने तो जा नहीं रहा पोलिंग बूथ में, किस वजह से जा रहा है? एक दो तरीके का इस पर अगर कांग्रेस की बात करें तो बेसिकली दो तरीके से वोट हुआ। एक तो बदलाव, जिन्होंने जो सरकार को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्या सालों से लोग कहते हैं बहुत बीजेपी देख लिया, बदलाव चाहते हैं, बस बदलना है, हर बार बीजेपी आ जाता है। सेकंड जो वोटर था वो था, एक तो बदलाव वाला वोटर हो गया, दूसरा जो एमएलए जो बीजेपी के थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो वोटर, वो वहाँ के एमएलएज को डिफीट करने के लिए। यानी आप एक लाइन ले रहे हैं कि एमएलएज, या बड़ी स्पेसिफिक लाइन ले रहे हैं कि एमएलएज और मिनिस्टर्स के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। एमएलए जो शिवराज सिंह चौहान एज ए पॉलिटिकल एंटिटी है या नरेंद्र मोदी, उनको एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएलएज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड लेवल पे थी। कास्ट सेंसस जैसा बड़ा इशू जो कि कांग्रेस बड़ा इशू बना रही है, इंडिया अलायंस बना रहा है, वो इशू था? नहीं, बिल्कुल भी ओबीसी वाला जो कास्ट सेंसस वगैरह ये था, ये बिल्कुल पब्लिक में मुद्दा नहीं था। इसमें पब्लिक को ज़्यादा, इसमें अवेयरनेस भी नहीं है पब्लिक, एक ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अवेयरनेस भी नहीं है पब्लिक को और इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। So that's Sandeep giving us a broad picture as far as the methodology adopted and the broad impressions that the exit poll survey has given. Soon we will be joined by Anshul Abhijit, senior Congress leader, spokesperson, and one of our favorite leaders, Meera Kumar's son. Thank you, Sandeep, for joining with us. The 2023 elections in Madhya Pradesh will be held in the shadow of a strange development that despite the 2018 mandate in favor of the Congress party, it is not the anti-incumbency of the Congress party which is going to decide the whole verdict. Because in 2020, the BJP with Jyotiraditya Scindia, senior Congress leader, confidant of Rahul Gandhi, switching over sides to the BJP on the 10th of March 2020, changed the verdict, the government changed, Shivraj Singh Chauhan came back to power, and that is why the BJP battles what could have been the Congress's anti-incumbency. I am joined by Anshul Abhijit, Congress leader. Anshul, is that one issue that the Congress will like to encash on, that how a mandate was remanufactured? Oh, absolutely. I mean, not just in cash. This is ये हकीकत थी, ऐसा हुआ था। भाजपा ने खरीद फरोख्त की राजनीति की थी, एक सरकार जिसकी बुनियाद नहीं थी ऐसा बनाया था, और इतना ही नहीं, what they did was they extended the lockdown period ताकि यहाँ पर अपनी खरीद फरोख्त की सियासत कर सकें और इस तरह की वो सरकार बना सके। देखिए, ये भाजपा की पहचान अब यही हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये किया है कि सियासत को किस तरह एक बाजार में उसकी तब्दीली हो जाए, जहाँ पर एमएलए खरीद सके। यहाँ पर ये पहला नहीं है, लेकिन ये इसका प्रतीक बन चुका है मध्य प्रदेश, और लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है। People are realizing that this is a stolen government, and they are. But aren't you lucky? Aren't you lucky? Otherwise, you would have been facing anti-incumbency today. No, we don't endorse this kind of politics anywhere. Yeah, we agree. No. It's not about being unlucky or lucky. It's just that people are really angry. We do not want to subvert processes of democracy. जो प्रजातांत्रिक हमारी जो परंपरा है
उसको आप विकृत करना चाहें हमेशा, तो ये हम कभी नहीं ये चाहेंगे। So let's see now what really have the voters on mind when they entered the polling booth. We have our survey says that there is a long list of reasons why voters in Madhya Pradesh, 75%, more than 75% of them have voted for or against a political party in Madhya Pradesh. And the top reason, if the first graphics from our exit poll comes out, is that 27.63% people, voters in Madhya Pradesh, are saying that unemployment remains the top item as far as the issues on which they have voted for a party or not. 35.32% are from the urban region, say that unemployment is a big issue. 24.9% in the rural region say that they voted for or against a party because unemployment was a big issue. The top region where the number of people who have expressed dissatisfaction with the employment situation in Madhya Pradesh is the 18 to 25, the threshold of joining a job, which is 36.4% people, voters are saying that they voted because there is rampant unemployment. The second top topic is inflation, price rise. 23.2% voters say that their vote was being determined because of the fact that there is expensive, almost everything has gone expensive in the last 5 years. And that also includes the period of hardship as far as people are concerned in the post-COVID lockdowns. The rise of prices in petrol and in fact the abolition of the subsidies. ये मध्य प्रदेश की बात हुई जब, तो कहा गया कि कोई वेव नहीं है, कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम भी क्या है कि सर्वेज में हम हमेशा देखते हैं कि बेरोजगारी जैसे उठते हैं, मगर वो होते नहीं है डोमिनेंट इशू, लोगों के पास और फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ कास्ट का बहुत दबदबा नहीं दिख रहा, बेरोजगारी जैसा एक इशू चुनाव तय कर सकता है? निश्चित रूप से बेरोजगारी, लेकिन मुझे लगता है ना कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। जो आप पिछले 2-3-4 इलेक्शंस का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बेरोजगारी का इशू होता है, पब्लिक में उठाने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में जितना कह रहे हैं उससे लगभग 10% ग्रामीण इलाके में कम कह रहे हैं, कम है। तो इसका मतलब वोट कहाँ से आता है? शहरी इलाके से ज़्यादा वोट आता है ग्रामीण इलाके। ग्रामीण इलाके में अगर वो इशू नहीं है, जो शहर में 10% है, तो शहर में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। क्या बेनिफिशियरी स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट चलाए, वो इम्पैक्ट करता है वहाँ पर, वो एक इशू है। दूसरा इशू, ये जो सर्वे लहर नहीं है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये सही बात है कि पूरा वेव नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसी का वेव एक जैसा है, शहर का वेव एक जैसा है, या ग्रामीण इलाकों का वेव एक जैसा है? इस वेव को जब तक हम डिकोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस वोट परसेंटेज में कम होने के बावजूद कुछ सीटें ज़्यादा निकाल के ले गई। उसकी वजह क्या थी? आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था। क्या इस बार कांग्रेस उसको रिटेन कर रही है, उस प्रदर्शन को? ऐसा क्या हुआ है कि रिटेन ना कर पाए? ऐसा इसलिए हुआ कि इसी बीच में प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से वो नहीं, प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हुए, सिकल वाला कार्यक्रम हुए आदिवासी में, जो भाजपा अपने आप को कमज़ोर पा रही थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। रिजल्ट में क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नुकसान की भरपाई कुछ हद तक करने में सफल हो जाएगी। आदेश, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने कैंपेन में, हमने जो पिछले 6 महीने में देखा कांग्रेस का, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जो कि दिग्विजय सिंह ने 2018 के चुनाव से पहले शुरू की थी। वो एक उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी, वो कई हज़ार माइल चले थे। उसके बाद एक नर्मदा पूजन भी हुआ था, और एक तरह से कांग्रेस ने उस समय अपना जो कैंपेन की शुरुआत थी वो एक धार्मिक टच, इमोटिव अपील से की थी। और अगर मैं पिछले 1-2-3 साल का अगर मैं क्रियाकलाप देखूं कमलनाथ का, तो हिंदू वाहिनी ज्वाइन करती है कांग्रेस। पहली बार देखते हैं हम कि कांग्रेस के दफ्तर में जय श्री राम के नारे लगते हैं। एक साध्वी को लाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और पूरे प्रदेश में गीता पाठ होते हैं। कमलनाथ साहब का अगर ट्विटर हैंडल देखा जाए तो वो अकेले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, बड़े नेता हैं या एक्स चीफ मिनिस्टर है, जो कि एक पीताम्बर धारण किए हुए उनकी छवि दिखाई देती है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बीजेपी के हिंदुत्व का ऑल्टरनेटिव जो है, इन मुद्दों पर लड़ने के अलावा एक हिंदुत्व का ऑल्टरनेटिव कांग्रेस जरूर लाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अगर बीजेपी को उसकी एज है तो उस एज को कम किया जाए।
नहीं, देखिए इसकी शुरुआत आप कर्नाटक चुनाव से देख लीजिए कि वहाँ पे बजरंग बली को लेकर चुनाव हुआ और एक बड़ा कैंपेन छेड़ा गया। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अपने क्षेत्र में छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ा मंदिर हनुमान जी का है। प्रियंका गांधी को बीच में ले जाएगा नर्मदा की आरती के लिए। समय समय पे कमलनाथ ने भी ऐसा किया, कर्नाटक के चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश तक। लेकिन दरअसल है क्या कि कांग्रेस भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीजेपी का जो मूल उसकी जो मूल आइडियोलॉजी है, वहाँ पे आप मध्य प्रदेश में कम से कम हिंदुत्व के नाम पे या नेशनलिज्म के नाम पे बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी को हराने के लिए मैं कहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हैं, कि इनको मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मध्य प्रदेश ये हार जाएं। जनता ने कहा कि नहीं आप मत हारिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको जिता के भेजेंगे। आदेश तुम्हारे किससे मशहूर है, ये बताओ कि किस, मुझे उदाहरण दो। यानी तुमने एक लाइन मार दी, मैं तो आता उदाहरण दो कि इन्होंने हारने के लिए कितना एफर्ट किया। मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब प्रचार की शुरुआत हुई, शिवराज सिंह चौहान 17 रैलियाँ कर चुके थे। लगभग एक हफ्ते का ये डाटा था। और दिल्ली में बताया गया राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस अध्यक्ष को, कि कमलनाथ जी ने अभी तक 3 ही रैली करी हैं। तो बोला कि वो कर क्या रहे हैं? बोले ये तो किसी को नहीं पता। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी कमान उनके हाथ में है, टिकटें उन्होंने बांटी हैं। और आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी आया था पहले कि जाइए और जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दीजिए। फिर उस पर बवाल हुआ, फिर दिग्विजय सिंह ने उसका जवाब दिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में। वो सब मजाक नहीं था, दरअसल वो डिफरेंसेस थे इनके बीच में, दोनों के बीच में। फिर क्या हुआ, हालांकि कहा ही जाता है कि जब 2018 में कमलनाथ को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना था, तो दिग्विजय सिंह ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी को कि हमारे महाराज साहब सिंधिया जी के पास तो बहुत समय है और ये तो अभी काफ़ी युवा हैं, आप कमलनाथ को बनाइए, इनका लास्ट चांस है। तो 18 में जब पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया था कमलनाथ को, उससे पहले ये मीटिंग राहुल गांधी के घर पे हुई थी, जिसमें सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद थे। और सिंधिया जी को उम्मीद थी कि दिग्विजय सिंह मेरा नाम लेंगे, लेकिन हुआ क्या, कमलनाथ के लास्ट चांस के ऊपर आपने उनको एक लास्ट चांस दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीने बाद सरकार गिर गई। जो भी था आपको सब मालूम है उसके बारे में। इस बार क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट दिल्ली आई तो राहुल गांधी और खड़गे जी के दफ्तर से फ़ोन किए गए कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह जो कि सीएलपी नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला महासचिव प्रभारी और स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कोनुगोलू, आप सब दिल्ली आइए। उन सबको दिल्ली बुलाया गया, खड़गे जी घर पे मीटिंग हुई, राहुल गांधी वहाँ पहुँचे। तो रैली से लेके प्रचार तंत्र तक तमाम बातों पर चर्चा हुई। और ये दिल्ली से तय हुआ? नहीं, ये दिल्ली बुला के ये कहा गया कि आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट संतुष्ट नहीं थे, प्रभारी की बात सुनी नहीं जा रही थी। दिग्विजय सिंह अपने आप में परेशान थे क्योंकि कमलनाथ ने वन मैन शो कर दिया था, लेकिन पार्टी ज़मीन पे काम करती हुई नहीं दिख रही थी। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी और खड़गे जी को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन जो वायदे उस मीटिंग में हुए थे, उसके बाद जब जैसे ही वो लोग भोपाल पहुंचे, उनसे फिर मामला वहीं पे आ गया, डाक के 3 पात। फिर दिग्विजय जी अचानक पीछे कैसे हट गए? देखिए, दिग्विजय सिंह, इस पूरे इलेक्शन में दिग्विजय सिंह की प्रेजेंस जो है वो बहुत हल्की लग रही है। दिग्विजय सिंह जो है ना राहुल जी, बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। आपको लगेगा कि वो ठाकुर साहब है, वो है नहीं ठाकुर साहब। ऐसा कहते हैं कि वो जो क्वालिटीज़ अर्जुन सिंह में थी कि यहाँ से कील घुसाई और यहाँ से निकाली, जो भी वो एक डायलॉग स्क्रू बन के निकलेगा, तो दिग्विजय सिंह भी उसी का एक छोटा पैक है। तो उनको समझना बड़ा मुश्किल काम है। मैं ऐसा मानता था कांग्रेस में कि 2 नेता ऐसे हैं, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत, कि इनको समझना बड़ा मुश्किल काम है। इनको कोई समझ नहीं पाओगे। मैं आदेश आपसे 2 मिनट चाहूँगा। हमारे बीच में आई हैव वन ऑफ द मोस्ट नोटेड sons of soil from Madhya Pradesh and one of my very old friends, Rashid Kidwai, who has written multiple books and knows the Congress party like the back of his hand, one hand, and Madhya Pradesh like the other hand. Welcome, Rashid. I heard that you were teaching in the morning and you have a very busy schedule. I'm sorry, I'm putting you away from all of that. Rashid, your broad impression on what is going to determine the outcome of Battle Madhya Pradesh 2023? See, I think the biggest thing about Madhya Pradesh election is the fatigue factor of the voter. Fatigue, as we understand, is something being, tired of a political party, ideology, a chief ministerial phase, etc. So, in other words, it implies actually a firm no
as far as the voter is concerned. Whether it will happen or not, but that is my hunch, because wherever I traveled and spoke to people, the one impression you got is that the BJP has been there for too long. People don't have any kind of impression of Kamal Nath government, which was very short-lived between December 2018 to March 2020. There are a lot of new voters, young voters every year, every cycle of election. Rahul, as we understand, 7 to 8% of new voters enrolled. So if you calculate from 2003 onwards, then you have at least 25, 26, 27, 28% of voters who have very little or no impression of what it is to be like in a opposition ruled state. I mean, other than the BJP ruled state. Then the second thing, Rahul, is most important factor that I see is the campaign by the top BJP leadership, that being Narendra Modi and Amit Shah. They bombarded the carpet bombing, whatever you call it, by central ministers, big BJP functionaries, and they talked about Ram Mandir and the other issue being corruption. Now, if we talk about corruption in Madhya Pradesh, people could not relate to Shriman Bantadhar, etc. What is the kind of used for the Vijay Singh government in 2003. So I think a lot of their efforts have gone in vain, because the voter was interested in matters of bread and butter, etc. The Congress had, of course, its own shortcomings. I think the poll verdict would be a pointer in that direction, because to my mind, as a political reporter, Rahul, you said so many kind words about me. I was expecting a 2003 verdict in Madhya Pradesh, when Vijay Singh was totally disseminated by Uma Bharti. So I don't see that happening now. I think the Congress will have a wafer-thin majority of, let's say, 125 seats or so in the House of 230. Rashi, since you watch the Congress and the Madhya Pradesh politics closely, I can see what, from the underline of what you're trying to say, is that Modi-Amit Shah duo tried to make Madhya Pradesh a largely central national kind of a mandate, whereas the Congress very cleverly kept it very local and state specific. It neither allowed national leadership to dominate and also national issues to get to dominate Madhya Pradesh. Is it why perhaps will you say that the Congress didn't make it a Rahul versus Modi kind of thing, instead made it a Shivraj versus Kamal Nath and the local leadership? Yes, I think Rahul, you have asked a very pertinent issue. See, I and both of us have covered a lot of elections and seen politics. Something very interesting has happened in Indian democracy. When it comes to state, I mean, I'm not talking about Madhya Pradesh, state after state, people being voters take a very judicious call. They decide on the kind of weakness and strength of a political party, individual, etc. So in state assemblies, if you see, it's not just about Uttar Pradesh, it's not about Tamil Nadu, Kerala, several states. You will see this kind of trend where governments are voted in or voted out on the basis of their work, the kind of contribution they have made to society and to the particular state. When it comes to Lok Sabha election, people go on the kind of a kind of captain thing, the person who they trust and who they have faith, and it becomes a bit of a emotional call. It's not that people are deciding on 543 Lok Sabha MPs, etc. This has been trend that we have seen in 2014 and 19. So in assembly elections, that is something. So the Congress was able to sense that, and they kept the focus down to these issues of power supply or the delivery mechanism and all the schemes that Mr. Shivraj Singh Chauhan had announced and had tried to implement or failed to implement. It's it's like an individual call. That was the thing. The BJP, what they tried to do in between, middle of elections, they tried to bench Mr. Chauhan, so much so that Prime Minister, not once, 14 public meetings, not once did he address Shivraj Singh Chauhan by name. Only towards the end he started talking about Ladli Bahna Yojana, etc. So the Congress was able to, and the Congress did not have resources, it did not have big leaders that you're talking about, Rahul Gandhi. He did not have, I mean, he had a goodwill, post Bharat Jodo Yatra. I think he was able to kind of relate to people, but not a game changer. So the Congress strength was the candidate and the candidate ecosystem, the kind of resources they had, the kind of talking point. Many of the things, Rahul, people had a local, election manifesto, constituency specific manifesto. These are the new things, and these are very things that I look forward to. I think that's something that is going to strengthen democracy regardless of who wins or loses.
See, Rashid, there is one interesting thing which you're raising, and from that, the granular data which we have been able to get as far as this exit poll is concerned, that if we talk unemployment, which are the segments of the society which are complaining most? I'll give you the numbers. 30.86 Brahmins feel that there is rampant unemployment. 27.21 Rajputs feel there is unemployment. 27.5% of Kushwahas, 28.35 Baniyas, and this is the segment which feels traditionally BJP voter feels, because the BJP has been able to shift its vote base, demographic vote base from upper caste to several OBC castes, and in fact Madhya Pradesh is one of the successful OBC plays as far as the electoral plays for the BJP, with Shivraj Singh Chauhan being a virtual compulsion, because the party has not been able to find an alternative to Shivraj Singh Chauhan as far as the OBC leader is concerned. So the BJP's own rank and file, which are the traditional voters, are complaining about unemployment. But then castes like in the SC segments are also complaining, like 32 to 35%, that there is rampant unemployment. The tribals are complaining that there is unemployment. So you have both traditional voters of the BJP and the non-voters of BJP, or who could have been the nouveau voters of the BJP, complaining about unemployment. Similarly, you have complaint against Bhrashtachar and price rise. Now these are the three features which I find in every poll. I find people talking about them. They may not vote because there is a Hindutva or a caste layer, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेड एंड बटर इश्यूज को छोड़ के आप इन इश्यूज की जगह आप जाके उन पे वोट कर देते हैं. बट इन द एब्सेंस ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी लहर or wave or undercurrent, if these three issues are becoming the dominant features of what you call disappointment in the government, that's what you're trying to say, Rashid? जी बिल्कुल. Rahul, what you're saying, what I said in the initially thing about fatigue, one of the reasons for fatigue has been that, that kind of status quo. Shivraj Singh Chauhan can take a lot of credit, or the BJP for that matter, in taking Madhya Pradesh out of that Bimaru that state category, that dubious category, and that kind of having a kind of leader in agriculture production, etc. But that all exists on a piece of paper. See, if you talk to anybody, I mean, this is something a bit of a paradox. You speak to a tribal youth, relatively educated tribal youth. If you talk about President Murmu or a lot of other things about that the holiday that Prime Minister announced, and kind of national status that was given to the tribal icons, people would acknowledge it. But then when it comes to job, a tribal youth is very, very disappointed that in spite of being tribal, in spite of having sizable kind of reservation policy, etc., they'll not be able to find a job. That's the same thing with OBC, that's the same thing with Brahmins. And coupled with it, in particular in Madhya Pradesh, all those that Patwari recruitment scam, and there was several that kind of paper leak. If this is the issue in Rajasthan, then it's an issue in Madhya Pradesh also. जैसे भर्ती नहीं होती. And I understand, as a journalist, I understand this is not Shivraj's problem, because government has no business to do business. Government cannot provide employment. The problem in state like Madhya Pradesh, there is very little private sector that is there. So as a result, all those things you may go on saying make in India, skill development, all those things. End of the day, the unemployment is very much high. And I think that is where it is hitting a lot of people very hard, because nothing has changed. I mean, if you look at Tamil Nadu, you look at even, I would say, Uttar Pradesh is doing better in terms of job opportunities, or getting people to do something. In Madhya Pradesh, it's, I mean, I am a critic of Yogi government, but Yogi government has put some kind of lid on this low level corruption. But in Madhya Pradesh, it is very much rampant. So I think, a voter in Madhya Pradesh is really caught in that kind of, a cycle, a vicious cycle, I would say, where there is no headway. So I think that's where Kamal Nath is seen as some kind of Karguzar chief minister, one who may bring some kind of industry or so. I mean, that is something, again, there is a qualitative difference. Rashid, if you hold that thought, I want to go to Sujit now. Sujit, बीजेपी कई सालों में एक डबल इंजन की सरकार की बात करती रही है. क्या यहाँ पे वो नेगेटिव बन जाता है? क्योंकि अगर मैं आंकड़ों को देखूं बेरोजगारी और महंगाई के लिए, तो ओवरऑल जो लोग हैं
राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला करके, क्योंकि अगर अलग होती तो वो अलग माने जाते, लेकिन करीब 73% लोग केंद्र और राज्य सरकार यानी बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी जैसी चीजों के लिए। निश्चित रूप से ये आंकड़े तो हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई वोटर नाराज़ है कि महंगाई हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अगेंस्ट में वोट डाल रहे हैं या उसके फेवर में वोट डाल रहे हैं। शिवराज सिंह से नाराज है कि महंगाई है, करप्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं? ये दोनों में एक अंतर होता है मुझे लगता है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम आबादी है, उसको अगर सारी सुविधाएं मिले, खुश हो, उसके बाद भी क्या वो भाजपा को वोट देने जाएंगे? मुझे एक यहाँ पर एक दिक्कत लगती है कि ये एक होता है। दूसरी बात है डबल इंजन की सरकार की जहाँ तक बात है, तो डबल इंजन सरकार का फ़ायदा मध्य प्रदेश के चुनाव में या कर्नाटक में हमने देखा है कि वहाँ पर नहीं मिला। ये बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि पब्लिक है बिल्कुल समझ गई है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही अलग अलग उस प्लेटफॉर्म पर लड़े जाते हैं। और आप लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे तो बिल्कुल ही चौंकाने वाले होंगे विधानसभा से, बिल्कुल ही अलग तरह से जा रहा है। पिछले 2 इलेक्शंस के आंकड़े तो हमारे सामने उपलब्ध हैं। इसमें सोच रहे थे कि अगर भाजपा के साथ दिक्कत नहीं होती, भाजपा इन चीज़ों को नहीं समझ रही थी कि बेरोजगारी है, करप्शन है, तमाम तरह की बातें हैं, शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया उन्होंने, या राजस्थान में वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किया? तो अभी मुझे जो लग रहा है भाजपा सिर्फ अपने कैडर पर जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत कैडर है, इसलिए वहाँ पर लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे नेताओं का उतारा जाना, दिल्ली से उनको वनवास में भेज दिया जाना, वो भी इसी एंटी इनकम्बेंसी एक आदमी को कम करने के लिए थी? नहीं, वहाँ पर तो जो जब इलेक्शन में फील्ड में आप घूमें तो बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक से बातचीत में निकल के आती है कि शिवराज ने जो गंद फैलाया है उसको हटाने के लिए अमित शाह को प्रधानमंत्री को उतरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब शिवराज सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना सब चीज़ होने के बावजूद एक क्लियर कट लहर क्यों नहीं दिख रही है वहाँ पर? और कांग्रेस के साथ फ़ायदा यहाँ पर यही है कि वहाँ पर उनके साथ क्लियर कट एक लीडर है जो शिवराज को रिप्लेस करने के लिए सामने है। भाजपा के पास शिवराज को रिप्लेस करके इसको देंगे, शिवराज को देंगे, ये कहने की बात नहीं है। तो क्लियर कट वोटर के सामने 1 दर्जन करीब तो है वहाँ मुख्यमंत्री। कंफ्यूजन है, इस तरह से तो पूरी पार्टी है वहाँ पर, किसी को भी बना सकते हैं, वो नहीं है। लेकिन फेस होने से बात, जैसे मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अगर 2014 के शुरू सीधे शब्दों में कि इनके पास आज भी स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा मास लीडर शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से है, क्योंकि अगर नहीं तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ाते। अगर लड़ा रहे हैं और ये कंफ्यूजन पैदा करें कि वो भी बन सकते हैं। आप क्या मजबूरी आफ्टर थॉट में लड़ाया गया? पहले क्या कुछ प्लान था कि नहीं देंगे टिकट? निश्चित रूप से जिस समय में ये चीज़ें हुई कि शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाए, नहीं उतारा जाए, तो उनको सेंट्रल केंद्र में मंत्री बना के लाया जाए। चौथी लिस्ट में नाम आया था, या चौथी लिस्ट में आया था। खैर उसको तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई उस समय मैंने हारे हुए का पहले हमने किया था ये वो। लेकिन मैं पहली बार देखा कि भाजपा का जहाँ पर रूलिंग सीएम है, लिस्ट जब जारी होती तो सीएम का नाम सबसे पहले होता था। ये फर्स्ट टाइम था जब चौथे लिस्ट में उनका नाम है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कैडर, अगर चेहरा का फायदा ये होता है कि सपोज करिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नहीं होते, भाजपा फिर भी 200-250 सीट तक जा सकती थी, उस समय लग रहा था। 2019 में चेहरा नहीं होता, फिर भी भाजपा जिस तरह का माहौल था आती। यहाँ पर चेहरे का फायदा तो होता है, भाजपा के लोग ही मानते हैं। अगर चेहरा है, कैडर है और चेहरा है तो फायदा मिलता है। कैडर और चेहरा ने येदियुरप्पा को आपने चेहरा प्रोजेक्ट किया था करप्शन के तमाम आरोपों के बाद भी, तो आपको फायदा मिला था। इस बार आपने नहीं किया, आप नुकसान में हैं। अंशुल, if I look at the price rise situation, घरेलू वस्तुओं की कीमत बढ़ना 76.61 people feel is one of the reasons why there is price rise. घरेलू वस्तुओं में LPG गैस सिलेंडर is a reason for price rise 61%, पेट्रोल डीजल के दाम 68%, महंगे दाम पर खाद बीज 45%. There are lot of factors which are part of a daily domestic life which are aggravating the inflation and price rise situation. Despite that, why has the Congress not been able to build a momentum on it to swing an election? No, I don't think that is the case, because the Bharat Jodo Yatra was precisely on these kind of muddas. बेरोजगारी, मुफलिसी, महंगाई, और ये हमने, और वहाँ पर मैं भारत जोड़ो में मैं खुद था, और वो जो हुजूम, वो जो उत्साह, वो देखने लायक था, वो सचमुच एक था। और वो मुझे लगता है कि किसी तरह उसने सियासत को बदला भी। लेकिन कुछ दिलचस्प बातें सुदेश जी ने कही कि ये जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, मुफलिसी का मुद्दा, ये जो महरूम होना, तो देयर इज़ अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप
between economic disparity and election results. I agree with that. It doesn't always matter. लोग अपने ये जो अपनी गरीबी है, बेरोजगारी, उसको नजरअंदाज करके और जज्बात पे वोट दे सकते हैं, लेकिन that is true mostly in national elections. लोकल इलेक्शंस में क्योंकि ये अप्लाई है, मुझे लगता है वो उस बात में सच नहीं है। Even said that this is going to dictate the mandate. I think so. तभी आपके नजर में है, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं इसकी बात से सहमत हूँ कि नजरअंदाज कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है कि आप नजरअंदाज कर दीजिए, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं जज्बात पे कोई वोट दूंगा, मैं किसी इमोशन पे वोट दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने बेरोजगारी लिखा है, मुझे लगता है क्योंकि ये व्यापक है, it will make an effect here. And the other point is, ironically, भाजपा हमेशा चाहती है कि लोकल इलेक्शन नेशनलाइज हो। They always try and nationalize local elections, but ironically, it is बेरोजगारी, it is all the national issues become non-localized. बेरोजगारी, महंगाई, ये पानी, ये तो व्यापक मुद्दे हैं सारी, ये तो सारे भारतवर्ष को मुतासिर करते हैं ना। Everyone is affected by it, and I think in this election the vote will be on these issues and not this kind of narratives that the BJP is trying to enforce. But I think here it is going to, because it shows so clearly in your numbers. It's and I think that will translate into votes. Apart from the other things that the Congress has done, we have एक तो बहुत चीज़ों का एक तब्दीली हुई है भारत जोड़ो से, और जो कर्नाटक का इलेक्शन हम जीत पाए हैं, हमने वादे किए थे और उतना ही नहीं, हमने वादों को मुकम्मल भी किया, वो अपनी मंजिल तक पहुंचाए। मुझे लगता है कि ये बात फैल चुकी है and people are beginning to realize that what we promise we actually do. Karnataka was some sort of game changer in the recent scenario, and I think it can be replicated here. Yeah.